one iodine, no required to balance. From +3 to +5, 2 electron loss. Now come to the second. IO2 minus gives iodine. First balance the iodine. There is 2, so I have multiplied 2. +3 to 0, 3 electron gain. For 2 iodine, 6 electron gain. Now I have to balance the electron, so I have multiplied 3 factor. So after multiplying 3, both sides 6 electrons. Yes. So 3 plus 2, 5. 5 IO2 minus transfer 6 electron, 1 will transfer. So 6 by 5 will be the n factor. Simple. N2O2. Other center, post your answer. What is the n factor of N2O2? Okay. There is a 6 and 10. There is 6 electron. This is 10 electron, right? So we have to multiply this by 10, multiply this by, so it will be 16 N2O2 transfer 60 electron. It is 60 by 16. Okay. So last ClO2. Coming to 4 by 3.
Clear? See, plus 3 to plus 5. Plus 5 means it accepts 2 electron. Plus 3 to minus 1, it accepts 4 electron. So I am multiplying the above reaction by factor 2. So now the reaction becomes 2 plus 1, 3 ClO2 minus transfer 4 electron. 1 will transfer 4 by 3. Clear? Clear? Any doubt in any step? Now you can able to calculate the disproportionate reactions equivalent weight, है ना? ज्यादातर ऑक्साइड्स डिस्प्रोपोर्शनेट में जाएंगे तो बहुत आराम से तुम उसका इक्विवेलेंट वेट बता पाओगे. See, in the 3 chemical properties we have completed. First one is hydride, second one is halide, third one is oxide. Oxide are of 3 type, generally 3 type. Okay, first one is M2O3, M2O4, M2O5. These are the 3 oxides, na? M2O3, M2O4, M2O5. These are the 3 oxides. Always remember that as you move in this direction, the acidic strength of oxide increases for all metals. Nitrogen, phosphorus, bismuth, up to nitrogen to phosphorus. Okay? From nitrogen to bismuth, this direction, acidic strength increases. Any doubt? But if you move on from nitrogen to bismuth, the acidic strength decreases. Means if I compare N2O3 and N2O5, which is more acidic, yes. If I compare Bi2O5 and N2O5, this is more acidic. Okay, so this direction acidic strength decreases. Is it clear? So these are the 3 main oxides, and all oxide when treated with water, it gives respective acids. N2O5 when treated with acidic water, it will give HNO3. Nitrogen form 2 type of acids. One is HNO3, other is HNO2, nitrous and nitric acid. Clear? Clear? Let's see the phosphorus oxides. Yes. This is the preparation of nitrous oxide. All the method of preparation of nitrogen and 3 oxides. Most common preparation of N2O, nitrous oxide, is ammonium nitrate heated at N2O5 and H2O. Clear? Ammonium nitrate is heated at very high temperature, approximately 250 degree centigrade. तो ammonium nitrate को जब हम 250 डिग्री में हीट करते हैं तो हमें N2O मिलेगा. Clear है? But the only problem is this N2O is always present in presence of H2O. Why we are heating? If we are not heating, it will not decompose first. Second thing is H2O में N2O अगर combined होगा nitrous acid बनेगा. तो जब आप हीट करते हो अमोनियम एसिटेट को NH4NO3 को, है ना, it will give N2O plus H2O and the temperature is, let's say, 250. So at 250 this is in the vapor form. So both are in the vapor form. They will not combine with each other. We can able to separate out N2O. Clear? So this is a very good method to prepare nitrous oxide is from ammonium nitrate. Now nitric acid, copper, the most common reaction if you have already completed D block element, copper react with dilute HNO3, not concentrated. Clear? Concentrated के साथ N2O मिलेगा. Copper अगर dilute HNO3 के साथ react कराएंगे तो हमें क्या मिल रहा है? NO. Clear? Now H2SO4 is FeSO4. This is also common reaction. KNO3 plus H2SO4 FeSO4 will produce NO. And catalytic oxidation of ammonia is common. Ammonia when treated with oxygen, limited amount of oxygen, and ammonia 4 molecule combined with NO. Clear? So these are the method of preparation of nitrous oxide, nitric oxide and dinitrogen. Clear?
ओके नेक्स्ट, सो प्रिपरेशन यू कैन एबल टू रिमेम्बर राइट, ठीक है। तुम्हें हाइड्राइड्स का जनरल प्रॉपर्टी पढ़ना है, हैलाइड्स का पढ़ना है और ऑक्साइड्स का पढ़ना है, और इन ऑक्साइड के स्ट्रक्चर को भी याद रखना है, ठीक है। कई बार वो स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं। सेकेंडली, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए, ठीक है। नाउ ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस, so this is the oxide, the two common oxides of phosphorus. In one time they generally ask what is the total number of bond between POP in P4O6. Clear? So you have to learn this structure. Tetrahedral form, all are sp3 hybridized. Each phosphorus is attached with 3 oxygen. Each phosphorus is attached with in P4O6. And in P4O10, each oxygen is attached with 3 oxygen. Apart from these 3 oxygen, every phosphorus consists of one double bond. दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, ये P4O10 है. In P4O10, each phosphorus is attached with 3 oxygen and one double bond O. Upon acidic hydrolysis, this phosphorus pentaoxide is converted to H3PO4, H3PO3, depend upon the type of hydrolysis. Clear? किसमें क्यों है बताओ? के पास एक लोन पेयर है, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इस लोन पेयर का कायदे से तो ये वाला एंगल 109 होना चाहिए. ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा रहा होगा, तो ये 127 पे आया. अब आप जैसे ही तुमने डबल बॉन्ड बना दिया तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डबल हो गई ना, तो रिपल्शन उसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, ठीक है. तो ज्यादा होगा तो वो और थोड़ा कम हो गया, नहीं है. नहीं तो स्ट्रेन तो हमेशा बराबर रहेगी, तो सिर्फ पाई क्लाउड ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज किया. क्लियर? नेक्स्ट, this is oxa acids of nitrogen. These are the two common acid. One is HNO3 nitric acid and nitrous acid. इन दो के अलावा हम ये दो भी पढ़ते हैं. हाइपोनाइट्रस एसिड, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. अगर हम इसको दोनों को कंबाइन करते हैं तो हाइपोनाइट्रस, वाटर एलिमिनेट होते हैं ना, हाइपोनाइट्रस एसिड. एंड these are the structures as well as the oxidation state. What is the N factor of this acid? 2. These 2 hydrogen can be replaced. What is the N factor of nitrous acid? 1. This hydrogen can be replaced. What is the N factor for this nitric? 1. This hydrogen will replace. And what is the oxidation N factor of this? 1. Which is more acidic between this and this? This one. Why? Because this negative can be stabilized by resonance, but this negative cannot be stabilized by रेजोनेंस. तो इनके स्ट्रक्चर्स, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके एन फैक्टर तीनों याद रखने हैं. सिर्फ नाइट्रस के ही नहीं, फास्फोरस के भी, है ना. फास्फोरस. नेक्स्ट स्लाइड फास्फोरस का है, जिसमें फास्फोरस के स्ट्रक्चर्स है. देयर आर 6 or 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस. फर्स्ट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. हाइपोफॉस्फोरिक एसिड H3PO2. H3PO2. What is the oxidation state of this phosphorus? A single, this line represent double bond. This is the structure is like this: P double bond O, OH, HH plus 1. Similarly this plus 3. ठीक है. तो ये क्या है? हाइपोफॉस्फोरस. दिस वन इज phosphorus. This one is hypophosphoric acid. This is orthophosphoric is common, most acidic one, and this is pyro. This is meta. Now this is the property of monobasic, means it can able to donate 1 H plus. So the N factor will be 1. Phosphoric acid can able to donate, so that it is diabasic, and the N factor is 2, not plus 2. N factor is always a modulus value. अगर कोई एक एटम या मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो N factor 5 है. अगर 5 लॉस करेगा तो भी N factor 5 ही है. सिमिलरली कितने H plus वो दे रहा है वो N factor है. क्लियर है?
कई बार देखना तुम एसिड का एन फैक्टर फ्रैक्शनल होता है. फॉर एग्जांपल इस H3PO4, H3PO4, the n factor is 1 2, and for this the n factor is 3, but the n factor is 3 only. With that we are expecting that all three hydrogen are replaced by some base. But if limited amount of base is added, for example this one, if H3PO4, the n factor is 3. Why 3? Because we can expect that all three hydrogen are replaceable, all three hydrogen are polar, all three hydrogen can be reacted. But if limited NaOH is added, it gives Na2HPO4 and H2O. So this H3PO4 is converted to Na2HPO4. How many hydrogen are replaced? 2. So the n factor is 2. Is it clear? How you define n factor actually in all these reactions? Let's say A react with B to give C. इसकी कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है. A का n फैक्टर होगा 3, B का n फैक्टर होगा 2. Clear? So the coefficient of B is actually the n factor of A. तो H3PO4 अगर 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा NaOH के साथ, ठीक है, and it give Na3PO4 plus water. So the n factor of H3PO4 is 3. 3 नहीं होगा, तीनों हाइड्रोजन दे दिए ना, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं. NaOH का n फैक्टर क्या है? 1. 1 OH is replaced, so यहाँ पे 1 लिखते हैं. ये रिएक्शन बैलेंस हो गई होगी, नहीं है? सो किसी भी रिएक्शन में क्या होगा कि अगर मान लो इसका n फैक्टर अभी देखो 2 था, तो यहाँ पे 2 लिखोगे. क्लियर है? कई बार वो फ्रैक्शनल वे में भी रिएक्ट करते हैं, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि H3PO4 हम कह रहे हैं ट्राई बेसिक है तो द n फैक्टर इज ऑलवेज 3. इट मे बी फ्रैक्शनल, 2/3 भी हो सकता है. अगर हम H3PO4 प्लस NaOH करते हैं और NaOH में 2/3 करके बैलेंस हो रहा है, तो H3PO4 का n फैक्टर 2/3 होगा. आ रहा है समझ में? So n factor is never be a constant value for tri-basic acid. It may change. किसी के लिए भी change हो सकता है. Clear है? And the structure are very important because they ask structure as well as the oxidation state and n factor. ठीक है? वो ये जानना चाहते हैं कि आपको स्ट्रक्चर याद है कि नहीं, इसलिए वो n फैक्टर पूछते हैं. अगर तुम्हें स्ट्रक्चर याद है तो तुम बता सकते हो कि n फैक्टर 3 है. क्लियर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आएंगे. अब ऐसा तो पूछेंगे नहीं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर तो बनाओगे नहीं ना.